यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पदचिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। सुप्रभात, मैं इशिता गुप्ता और मैं राघव गुप्ता अपने 4 साथियों तेजस गुप्ता, विधि कप्रुवान, समीक्षा मोंगा और अराहन यादव के साथ आज के 73वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। Today is a time for fireworks and fun, but we should not forget its reason. Today is the day our nation became a republic and the date of birth of our country's constitution. Greetings to all of you on the eve of the 73rd Republic Day of the world's largest and most vibrant democracy. So friends, today we have gathered here for participating in the glorious Azadi Ka Amrit Mahotsav, which underlines the grandeur of our nation's journey of achieving greatness through 75 years of pure brilliance. More than 70 years ago, on this very day, we, the people of India, adopted, enacted, and gave to ourselves a unique constitution. It is pertinent to remember here the father of our constitution, the Yug Purush Baba Sahib Ambedkar, and his powerful words that the constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. Ladies and gentlemen, today is the day to celebrate and yet again pause and ponder over the core values that our constitution propounds. Government of India's initiative, Azadi Ka Amrit Mahotsav, is one such program to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievements. जब भी मनियर विचलित हो तो हिम्मत भर जाए नवकार। जहां गम के घने साए, वहां नवकार के छाए। मुझे कठिनाइयों से भय अब जरा भी नहीं लगता कि जब नवकार का हो साथ तो संभव हो जाती है हर बात। कृपया अपने हाथ जोड़कर नवकार मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमो हरिहन्ताणं 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 नमो नमो सेथाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वछायाणं नमो लोई सब साहुणं नमो लोई सब साहुणं ईसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आज के ही दिन साहस, त्याग, सत्य और शौर्य का प्रतीक तिरंगा घर घर फहराया जाता है। आज के दिन श्यामलाल पार्षद की देश प्रेम कविता याद आ जाती है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। Freedom should not be something
you have to deserve. It's something you just naturally have, something that no one can take away from you. I request all of you to stand up for the flag hoisting ceremony and national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, memories in our soul. Let's salute the nation on this 73rd Republic Day. After uncountable sacrifices by our freedom fighters, we got independence, and because of it, we can gather and speak freely today. We owe a great thanks to all of them. I salute all those freedom fighters. Good morning to everyone present here today. I am highly honored and feel privileged to have been given the opportunity to welcome the today's chief guest, retired Major General P.K. Sehgalji. P.K. Sehgalji is the defense expert who is a veteran of the Indian Armed Forces and a leading expert in electronic warfare. We welcome you, sir. I also extend my warm welcome to all the esteemed dignitaries present here today. Heartiest greetings to all the honored guests on this momentous occasion. It was this very day in 1950 the Constitution of India was implemented by the Constituent Assembly under the guidance of Dr. Bhimrao Ambedkar. It came into force and India emerged as sovereign democratic republic. The Constitution was adopted on 26 November 1949 and it was enacted on this historic day because this is the day the people of India gave the call to Purna Swaraj or complete independence. Friends, a nation actually becomes independent not when the alien rulers leave the boundaries of the country, but when it has its own government, which is by its own people and for its own people. This happens only when a nation has its own constitution. India takes pride in having the longest written liberal democratic constitution of the world. We extend a sincere welcome to Principal Ma'am Mrs. Ruchika Sukhija, who is one of the most resourceful, passionate, and inspiring mentor of MSMS. You have guided us not only in our development, but also in enhancing our creativity and knowledge. We firmly believe that with your guidance and persistent motivation, we will reach the next levels of glory. We heartily welcome you, ma'am, and we extend our sincere gratitude for your presence on this gracious occasion. We will be highly grateful to you for sharing your pearls of wisdom. Welcome, ma'am. Thank you so much, Arhan. Good morning, everyone. Jai Janendra to everyone. On our 73rd Republic Day celebrations, I extend a very warm welcome to our chief guest, Major General P.K. Sehgalji, defense expert. Thank you, sir, for so very graciously accepting our invitation to be the chief guest in this program. Let me also welcome our esteemed management members, parents, dear Mahavirians, and my valuable colleagues.
At the very outset, I wish each one of you a very happy Republic Day. When our nation celebrates 73rd Republic Day today, let us pledge to take part in nation building in our own unique ways. It is highly inevitable for us to uphold all our rich traditions and cherish our culture. Dear students, you are the ambassadors of our nation who can spread the richness of our values. To make this possible, you need to take extra endeavors to understand our values and culture very well. Our dream is that all of you grow up and develop as integrated personalities and become true global citizens who will contribute immensely towards nation building and also for the world peace at large. Azadi Ka Amrit Mahotsav is the theme that we have chosen for this year's Republic Day celebrations. A very apt one, as the entire nation has come together to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. Perfect time to remember and recall the countless contributions of freedom fighters and the contribution of these 75 years of independence in making of India, and to contemplate what we expect from the next 25 years, that is Amrit Kal, and how we can make most of it to strengthen ourselves further as a nation. But how can we contribute? This is the most common question. I am not in a very powerful position, so how can I contribute? I think by doing what we are doing very well, by striving for excellence in our studies as students, by taking every challenge as an opportunity for betterment, by dreaming the impossible, and most importantly, by walking our talk. For you, dear students, you have enough talents, you have discipline, you have the determination to achieve goals that you set for yourself. I am sure that with courage, strength, and tenacity, you can strive to reach the stars. For you, even the sky is not the limit. By pledging to lower barriers and obstacles, and with the use of creative and transformative educational experiences, we at MSMS hope that we are able to ignite in our students a spark of confidence, a spark of diligence, a spark of collaboration, so that they become successful, take others with them, and serve the society. When our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, proposed that we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, I think he desired that all of us should get closer to our values, our rich culture, our rich heritage, and our rich legacy, so that we feel our Indianness. At MSMS, we have actively participated in all the activities of this very important Mahotsav, and our guest today will see a very small glimpse of our year-long celebrations. Dear students, let us join hands and in solidarity work towards the fulfillment of the goal of a cleaner, brighter, and a prosperous India. Our chief guest today, Major General P.K. Sehgal, defense expert, needs no introduction. Almost every day he appears on 3 to 4 channels and gives his expert opinions. It won't be an exaggeration if I call him a walking, talking encyclopedia. All the interactions that I have had with him have been very, very enriching. Every interaction with him has given me so much food for thought, and every time a new perspective. He is popularly known as defense expert, but I would prefer to call him a student's expert. Not only is he a favorite among students, but I think since his retirement, he has guided and mentored uncountable students. He's very progressive in thought and action and actually leads by example. He is so well-read and so very knowledgeable that he can speak on any topic for hours and hours, and no one would even blink. This is the charisma of this gentleman. At the same time, he is such a humble person that we can all take a leaf out of his life. Relentlessly and selflessly serving the society, he never pauses and never gets tired.
When I extended the invitation for today's program to him, he readily accepted in spite of the fact that he's always so busy. And this is primarily because of his love and concern for children. You call him to any corner of India for mentoring students and he would readily do it. Sir, we are deeply grateful to you for your presence today. You have actually added value to our celebrations. Thank you so much, sir. Let me also thank Mrs. Geeta Kumar, the convener, and Ms. Navtej, the coordinator of today's program. They have worked persistently to give a perfect shape to today's celebration. And kudos to the team MSMS, who have been raising the bar with each presentation. I'm deeply thankful to all of you for providing these unprecedented, joyful learning experiences to our Mahavirians. Believe me, they're never ever going to forget your contribution to their lives. No presentation, no program, no event can be successful without the unstinted support of the parents. Dear parents, thank you so much for your unwavering faith in us. You motivate us to better our best. My deep gratitude to our visionary management for always inspiring us and being a strong pillar. And most importantly, a huge shout out to all Mahavirians who have displayed their persistence, resilience, and never say die spirit. I just want to tell you all that you have much more potential than you can imagine, much more strength than you think, and you are much more capable than you ever realize. So take it upon yourself to be a better version of yourself every day. Thank you. Jai Hind. आपके सकारात्मक विचारों के लिए धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदया। अपने देश के वीर जवानों के फौलादी इरादे और जज्बे को याद कर मशहूर शायर सरदार जाफरी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। गरजती हैं तोपे गरजने दो इनको, बिगुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको। जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रह न जाए रक्त की बेला, जरा सी अमृत उठा लेना, आजादी अब परवान चढ़ेगी, भाग्य से आंख मिला लेना। दूर ना होना, अधीर ना होना, डरना ना अत्याचार से, आओ मिलकर करते हैं हम सब देश मंथन एक नई शुरुआत से। इसी के साथ अपनी अभिव्यक्ति देने आ रही हैं 8वीं अ से अंशिका गुप्ता। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करे उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। मैं कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है, आजादी के मतवालों की याद फिर से दिला रहा है। भारतीय सभ्यता अति प्राचीन, भारतीय सभ्यता अति प्राचीन, दुनिया को जिसने मार्ग दिखलाया, खुद ही रास्ता भटक गए जब अंधकार का युग था आया। बने गुलाम आक्रमणकारियों के, बने गुलाम आक्रमणकारियों के, आपसी तकरार के कारण हम विदेशी भी शासक बन बैठे, ऐसे पतन में फंस गए थे हम। फिर 1857 में एक जली ज्वाला सोई आजादी के नाम पर, फिर कुछ अपनों की निर्लज्जता से नहीं पहुंचे किसी अंजाम पर। वीर शिवाजी तात्या टोपे, वीर शिवाजी तात्या टोपे, उस लक्ष्मीबाई रानी ने, आजाद भगत सिंह मंगल पांडे, लाला लाजपत राय की कुर्बानी ने, आजाद भगत सिंह मंगल पांडे, लाला लाजपत राय की कुर्बानी ने जड़े हिला दी साम्राज्यवाद की, जड़े हिला दी साम्राज्यवाद की, गांधी जी के सत्याग्रह ने, कुछ सत्य अहिंसा की ताकत से, कुछ जनता की जागृति ने। आजादी को हुए साल 75, आजादी को हुए साल 75, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे मंजिलें और भी हैं, अभी तो बाकी कई लड़ाई हैं, आगे मंजिलें और भी हैं, अभी तो बाकी कई लड़ाई हैं। याद करें उन रण बांकुरों को,
याद करें उन रन बांकुरों को जो अपनी जानों पर खेल गए, तन मन को न्यौछावर करके काले पानी की जेल गए, तन मन को न्यौछावर करके काले पानी की जेल गए। नई पीढ़ी को भी जानना होगा, नई पीढ़ी को भी जानना होगा क्या आजादी की कीमत है। स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली थी, यह लाखों जन की हिम्मत है। स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली थी, यह लाखों जन की हिम्मत है। फिर उठेगा मेरा भारतवर्ष, फिर उठेगा मेरा भारतवर्ष, फिर विश्व गुरु का मान होगा। फिर बनेंगे हम आत्मनिर्भर, फिर मुट्ठी में आसमान होगा। फिर बनेंगे हम आत्मनिर्भर, फिर मुट्ठी में आसमान होगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आओ मिलकर करें हम सब संकल्प अब। नव भारत के निर्माण को करना होगा देश मंथन, अमृत को खोजकर करना होगा आविष्कार अब। अमृत को खोजकर करना होगा आविष्कार अब। जय हिंद। शानदार प्रस्तुति अंशिका। That was indeed a beautiful recitation. Let us encourage with a huge round of applause. Today, ladies and gentlemen, is also the day to remember the contributions of our brave soldiers who march out in the spirit of brotherhood and nationhood and defend the colors of our flag with all that they have. A call to duty is sent out, and the strong and the brave reply. They do it for love of country, so there's never a need to ask why. They leave behind all that they love, their families, their homes, and their lives, because to preserve these precious things is the goal for which each soldier strives. Veer Gatha project is one such initiative which was launched by Ministry of Defense, Ministry of Education, and CBSE to inspire the school children of the country with stories of war heroes and brave hearts. It is a matter of immense pride for us that our school participated in the project commemorating the acts of bravery and utmost sacrifices of armed forces and gallantry award winners in various ways, including writing and reciting poems. भारत माँ के वीर जवानों, तुमको मैं सत्कार करूं, नमन वंदना स्तुति तुमको, तुमको मैं प्रणाम करूं। जज्बा तेरा, हिम्मत तेरी, तेरे वीर साहस को सलाम करूं। भारत माँ के वीर जवानों, तुमको मैं प्रणाम करूं। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के सहयोग से देश भर के स्कूलों में वीर गाथा परियोजना के तहत प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 4,788 स्कूलों के 8,03,900 छात्रों ने भाग लिया। इसमें से 25 छात्रों का चयन हुआ है, जिन्हें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। Garv Jain of our school has made it a part of the Super 25 and won himself a cash prize of ₹10,000, Republic Day badge, e-certificate, and an express entry to Rajpath on 26 January 2022. He has been mentored by Mr. Harish Verma, HOD of Dance and Drama Department. Let us have a look at the Veer Gatha project entries and admire the sincere efforts.
राजापुरम में नक्सलवादी सीआरपीएफ के जवानों का इंतजार कर रहे थे कि वे उन पे हमला कर सके। वे सीआरपीएफ के जवान लगते हैं, अपने साथियों से बोल दो हथियार उठा ले, तो यही समय है बदला लेने का। हाँ सरदार, मैंने सबको खबर कर दी है, वे अपनी जगहों पे छुपे हुए हैं। जैसे ही सीआरपीएफ के जवान आएंगे तो भून देंगे। सर हमें लगता है नक्सलवादियों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। हम भारत के वीर सैनिक हैं, हारना तुमने कभी सीखा? Really blessed are the minds and the hearts who have worked on this tremendous project. Taking our celebrations further, the Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also put within them the power and potential to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. It is an embodiment of all that is progressive about India's social, cultural, political, and economic identity. संगीत से ही साज और आवाज है, संगीत से ही अंत और आगाज है। पिता की डांट, माँ की लोरी में संगीत है, बच्चे के खिलखिलाने व रोने में संगीत है। No celebration is complete without music. With the atmosphere already filled with patriotic zeal, let us make it affectionate and warmer with a zealous musical presentation with our school's music group. इस व्यस्त, भीड़-भाड़ और भ्रष्ट संसार में जहां हर कोई हर समय एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है, ऐसे कठिन समय में संगीत हमें खुश रखता है और हमारे मस्तिष्क को राहत प्रदान करने में मदद करता है। तो आइए हम सब मिलकर हमारे विद्यालय की संगीत विभाग द्वारा तैयार की गई एक शानदार प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है।
जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आजादी की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना है, आजादी की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना है। अनगिनत ही देश पे मिटने वाले आखिर कितनों को हमने जाना है, आखिर कितनों को हमने जाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटाना है, इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटाना है। आजादी की वीर गाथाओं को आखिर कितना हमने जाना है, आखिर कितना हमने जाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। पचहत्तर सालों के आजाद भारत को जाने कितना जमाना है, 75 सालों के आजाद भारत को जाने कितना जमाना है। क्या पाया क्या खोया हमने, विचार इस पे फरमाना है, विचार इस पे फरमाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। लेकर सीख अतीत से कुछ नया हमको कर जाना है, लेकर सीख अतीत से कुछ नया हमको कर जाना है। इतिहास को अपने दिलों में रखकर भविष्य को बेहतर बनाना है, भविष्य को बेहतर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मिला है हमको ये सुनहरा मौका, इसको नहीं गवाना है। मिला है हमको ये सुनहरा मौका, इसको नहीं गवाना है। 75 सालों की उपलब्धियों को दुनिया को बदलाना है, दुनिया को लेने हैं 75 नए संकल्प। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। अब शुरू हुआ भारत का अमृत काल। आत्मनिर्भर बनकर खुद पर यकीन करके आओ मनाएं हम सब आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। वाह, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। It gives me immense pride to heartily acknowledge the achievements of our young Mahavirians who have excelled in the field of academics. जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आइए अब देखते हैं शैक्षिक प्रगति की सुंदर सी प्रस्तुति।
That was really a splendid lineup of prizes, and we congratulate all the winners. Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete, its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and are source of prosperity. Let's for it work hard and for its safety be on guard. Moving ahead, 26th January will always be recalled in Indian context as a festival that celebrates our spirit of democracy with a military parade that starts from Vijay Chowk and culminates at the Red Fort in the national capital, that is Delhi. The weapons and equipment that the army shows in the parade reflect the power of our armed forces. Now, Anya Jain of class 11th A will show her patriotism through her English speech. One nation, one vision, one identity. No nation is perfect, it needs to be made perfect. Virtual greetings to everyone present here for celebrating the auspicious occasion of Republic Day. I, Anya Jain of class 11th A, is feeling privileged on showcasing my thoughts over the great Azadi Ka Amrit Mahotsav. Republic Day, as we all are aware, marks the commemoration of the process of establishment of an extraordinary constitution. The day was engraved with the gold letters in the history of nation as India turned into a secular and democratic country. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievement. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and the potential to enable our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of activating India 2.0, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. This Mahotsav is also an embodiment of all that is progressive about India's socio-cultural, political, and economic identity. While celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav, we Indians will once again turn the pages of our history and know in detail about all the important events, movements, and great revolutionaries during the freedom struggle. Apart from this, getting the golden opportunity to know about the freedom fighters who were lost somewhere from the history is also something that cannot be ignored. I want to conclude this speech by saying that India is a democratic country. The citizens living in a democratic country enjoy the privilege to elect their leaders to lead the country. Although we have seen a lot of economic improvements and success as a country, but we still have many hurdles in our path, such as poverty, unemployment, pollution, and the last 2 years COVID-19. This year, we should concentrate over the process of sustainability. Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship, and strengthen governance. The youth of any society are the true engine of the growth and development. They should be rightly empowered, so it is our duty as a citizen to face these challenges and come out stronger on the other side. Thank you and Jai Hind. Those were some very stimulating words. Equally stirring will be some yoga poses that will motivate all of us to transform ourselves into a strong workforce, which our country can be proud of. वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग शांति के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, अपितु मन और मस्तिष्क को शांति के साथ बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का
व्यायाम होता है, जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। और योगासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सहज और सर्वसुलभ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारत में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विद्यालय की सहभागिता भी प्रमुख है। आइए अब सूर्य नमस्कार से संबंधित खेल कूद विभाग द्वारा तैयार की गई योगासन की वीडियो देखते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगा। धन्यवाद। The students have excelled not only in academics but also in intra-class competitions and a variety of other co-curricular activities. Keep cheering and motivating our young minds. सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण के साथ साथ चलती हैं, जैसे संगीत, खेल, पीटी और नाटक आदि। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इसे नई शिक्षा नीति में भी शामिल किया गया है। साथियों, को करिकुलर एक्टिविटी एक प्रकार से साधन का काम करती हैं, जिसके माध्यम से ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए को करिकुलर पुरस्कार से संबंधित वीडियो पर एक नजर डालते हैं।
सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयां। It gives me immense pride to heartily acknowledge the achievements of our young Mahavirians who have excelled in the field of academics. जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आइए अब देखते हैं शैक्षिक प्रगति की सुंदर सी प्रस्तुति। Art has the power to transform, to illuminate, to educate, inspire, and motivate. Art has the role in education of helping children become like themselves instead of more like anyone else. Let's motivate the young artists for their commendable performances in the field of art. We are here to showcase the glimpses of ingenious artwork done by our innovative Mahavirians.
चीज है कला, प्रयोग करके इसका लोग देते सबको हिला। बचपन से होती है सब में यह कला, जो पहचान कर उन्हें उभारे वही खिलाड़ी बड़ा। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहू, गरबा, भांगड़ा, गिद्दा, छाऊ, घूमर, कालबेलिया आदि अनेक लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। नाटक के माध्यम से दर्शाया गया कोई भी संदेश अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे ही मनमोहक प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नृत्य और नाटक विभाग को। भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में अनगिनत वीरों ने जन्म लिया और समय समय पर अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों के बलिदान दिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। भारत की सीमा पर हमारे जाबाज बहादुर सिपाही अडिग खड़े हैं। तब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसे ही एक जाबाज बहादुर सिपाही थे कैप्टन आशुतोष कुमार। कैप्टन आशुतोष कुमार का जन्म 15 अक्टूबर 1996 को बिहार के परमपूर्ण गांव में। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उड़ीसा के सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से की। सैनिक स्कूल में पढ़ते हुए उनका आर्मड फोर्स के प्रति झुकाव बढ़ा। बेटा, मेरे साथ के सभी तो जेई और नीट के एग्जाम दे रहे हैं। तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रखा है? माँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एनडीए की परीक्षा दूंगा। अरे वाह, देश की सेवा करने का सौभाग्य, ये तो बहुत ही महान बात है। 2018 में 21 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट के रूप में मद्रास रेजिमेंट के 18 मद्रास में उन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो अपने निडर सैनिकों और कई युद्ध कारनामों के लिए जानी जाती है। लेफ्टिनेंट आशुतोष कुमार, आपको जम्मू कश्मीर क्षेत्र में थैंक यू सर। नवंबर 2020 में कैप्टन आशुतोष कुमार की युद्ध टीम 18 मद्रास रेजिमेंट को नियंत्रण रेखा यानी LOC के करीब जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात किया गया और जल्द ही वह एक शानदार अधिकारी के तौर पर उभरे। जैन सर, ये नियंत्रण रेखा है जो अत्यधिक सक्रिय और अस्थिर है। सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। साथियों, हमें सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करना है। तुम सब मुस्तैदी से सीमा पर नजर रखो। एक भी घुसपैठी सीमा पार नहीं करना चाहिए। सीआरपीएफ मैसेज आया है कि LOC से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ कर लिया है और सब लोग गोलीबारी शुरू कर दी है। साथियों, हमें हर हाल में इस घुसपैठ को नाकाम करना है। तैयार हो जाओ। 18 मद्रास के सैनिक घुसपैठियों से निपटने के लिए पहुंच गए और कैप्टन आशुतोष कुमार ने अपनी टीम के साथ घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने और आतंकवादियों को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया।
चारों ओर से पोजीशन ले लो। इनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दो। चलो चलो चलो। 4 बज गए हैं और अब कोई आतंकवादी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है भाग गए। नहीं, दुश्मन बहुत चालाक है। तुम सब अपनी पोजीशन पर डटे रहो और तुम दुश्मन को ट्रैक करने की कोशिश करो। यस सर। और आतंकवादियों से जो संपर्क टूट गया था वो 10:20 पर फिर से स्थापित हो गया। फिर भीषण गोलीबारी भी हुई। इस गोलीबारी के दौरान कैप्टन आशुतोष कुमार और उनके 4 साथियों को गोलियां लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में कैप्टन आशुतोष कुमार और 2 सैनिक हवलदार प्रवीण कुमार और राइफलमैन रियादा महेश्वर ने दम तोड़ दिया और वह शहीद हो गए। कैप्टन आशुतोष कुमार महज 24 साल के थे जब आतंकवादियों से लड़ते हुए वह शहीद हुए, अपने साथी सैनिकों की जान बचाने और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए। 18 मद्रास रेजिमेंट के कैप्टन आशुतोष कुमार के मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ए सरजमीने हिंदुस्तान, तेरे उन जानिजारों, जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जागा हुआ भारत है ये। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमीर चादर ढेके शुद्धिर शूरे गानाए सिंधमिळ्वानिल पुदिय पुविडियल आयुर्माधवन तोडिडुदे। विश्व प्रेमाची ओढून चादर खऱ्या सुरांनी गाता है। एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो उगाड़े छे। जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तु भारतम, जय तु भारतम, वसुधैव कुटुम्बकम भारतम, जय तु भारतम। हो जाएंगे नई राहें, लिख देंगे आशाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार को जीते मन,
यही प्रार्थना करता भारत, विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चल, विश्व प्रेम की ओर जनरिया। लिख देंगे जय तु भारत। वाह, बहुत ही मनभाविनी प्रस्तुति नृत्य और नाटक विभाग द्वारा। Lay your life down so a stranger can live? Can you give all one needs and give less than you give? Could you hold your head high when no one knows your name? When you know we are alone, still find that grace. For that's how legends are made. That's how legends are made. One such living legend is amongst us, ladies and gentlemen. He is none other than our chief guest of the day, Major General Pramod Kumar Sehgal, who post-retirement has been a defense expert, keynote speaker at many international seminars, a trainer to over 3,000 captains and majors, headed 2 NGOs, and has many more feathers in his cap that can be counted on fingers. Let us witness his charisma through a humble presentation made in his honor by Team MSMS. That was a spellbinding presentation. For our tomorrow, you give us today. We sleep peacefully as the Indian Army is guarding our frontiers. We salute and respect the Indian Army. Retired Major General P.K. Sehgalji is a veteran of the Indian Armed Forces and a leading expert in electronic warfare. He has served with the Indian Armed Forces for 41 years and has been working for the empowerment of millions of children from different schools and colleges. Sir, you have made our country proud of your distinguished work in numerous capacities. दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। जो किया आपने उस उपकार के लिए, नहीं शब्द हमारे पास आभार के लिए। A very warm welcome to you, respected sir. I feel honored to have been given the opportunity to speak about your accomplishments. Your gracious presence will help to enlighten all of us present here
I would like to invite the chief guest of today to speak a few words. Honorable Principal, esteemed guests, parents, teachers, and dear children, ladies and gentlemen, it's indeed an honor to be speaking to some of the finest and the most brilliant children of my country. At the very outset, I wish to convey my felicitations for our country's 73rd Republic Day. Ladies and gentlemen, we have come a long way since our independence in 1947. I am very certain that in the next 10 years, India will be among the strongest in the world, both economically and militarily. Fortunately, our children are relatively more focused today than ever before. Pandemic notwithstanding, they are beginning to think and dream big. Many of them are making a mark at the global level at a very young age. In the last 5 years, 1/3 of unicorns, that is billionaires in the world, are Indians. 50 more startups, as per the Prime Minister, are likely to become unicorns this year. Your today's program, woven around the theme of Azadi Ke Amrit Mahotsav, convinced me that the children of Mahavir School are in very safe, sure, confident and steady hands. Incidentally, this is the second time that I am interacting with your school. On both the occasions, I felt charmed by the school's commitment and devotion and the support that the management lends to the principal. Despite the huge compulsions and constraints imposed by the pandemic, children of the school have done very well. My congratulations to the management, the principal, and our staff for the same. Also, my congratulations to those children who excelled in academics, sports activities, and co-curricular activities. They've done themselves, their parents, and the school proud. I would also, at this point of time, like to compliment Gaurav Jain for having achieved the impossible, for having been amongst the 25 super performers, which is something absolutely marvelous. Now coming down to the program per se, despite the difficulties caused by Corona protocols, you all put up a scintillating and a heartwarming performance. Most of you looked angelic. Each and every item was presented so skillfully that I genuinely relished the flavor of Azadi Ke Amrit Mahotsav. The fervor, the passion, the gusto, the sound and allied effects were superb. I genuinely felt blissful. I'm sure your parents too must have been overwhelmed with such an outstanding expose. The way you acted, danced, sang was a treat to watch. You all looked very charming in your colorful costumes. Your smiles, poise, and joyful faces would have perhaps made Bollywood squirm at the level of competition being offered by MSMS. The choreography was par excellence. I would request you all to join me in complimenting all those on stage and off stage who worked so hard, perhaps for several weeks, to make this program truly memorable. It would be unfair on my part not to mention the professionalism displayed by young masters of the ceremony. They were carrying the burden of the show on their delicate shoulders. I must say, all of them were simply outstanding. Their diction and the manner of putting across was something which was commendable. We genuinely felt very sorry when the program ended. I am sure your parents would have had similar feelings. The children have done their school, their parents, teachers, and everybody else connected with this event extremely proud. Now a few words regarding India. Children, when we attained independence, we were mired in abject poverty, hunger, and illiteracy. 80% of our population was below the poverty line, as against around 20% today. Until 1969, all Indian prime ministers went to America with a begging bowl asking for food aid. Now we are having difficulty in managing the surpluses. We are the only country in the world which is willingly donating food to several countries in Africa and Southeast Asia. We are also donating 50,000 tons of wheat to Afghanistan to overcome hunger and drought. As regards literacy, when the Britishers left India, only 12% of our population was literate. Today, around 77% of our population is literate. Our average lifespan at independence was 32 years.
Today, thanks to better healthcare, it's 69.5 years for men and 72 years for women. Let's now look at the GDP. When the Britishers left, India's GDP was a mere 2.7 lakh crores in 1947. Today, we are the fastest growing economy in the world. Today, we are the fastest growing economy in the world, and only 4 countries are ahead of us: United States, China, Japan, and Germany. And our GDP today is $2.8 trillion. We had only 5 billionaires at the independence. Today, we have 142 billionaires. And as per our esteemed Prime Minister, 1 billionaire is being added every week. Further, 36% of scientists at NASA and 38% of doctors in the United States are Indians. And 30% of Fortune 500 companies have Indian CEOs. In addition, 1/3 of all engineers in the famed Silicon Valley are from India. And 10% of world's high-tech companies have Indian CEOs. And when you come down to military prowess, the Indian Army is today amongst the most revered, respected, and regarded army in the entire world. And we have become the guardian angels of India's homogeneity and integrity. I would like to mention to you that if you look at pre-independence, India was the only country of continental size which was ravaged and savaged, shamed and maimed time and again. Whoever came from our western borders, that is through the Khyber Pass, got the better of us. And whoever attacked us from the sea frontiers also humiliated us. And we suffered this humiliation for almost 1,000 years. Muhammad Ghazni to 17 bari aaye, and each time he carried back with him tons of silver and gold. Our men folk were slaughtered. Our sisters, our mothers, our daughters and daughter-in-laws were taken back for debauchery and harem. Our women committed johar again and again, not because they wanted to sacrifice themselves. They knew that the menfolk did not have the courage, the strength, and the ability to protect their honor. And instead of falling to the debauchery of the marauders, they sacrificed their own life. Our armies were weak, and we were roundly defeated each and every time. Post-independence, we have fought 5 wars. We lost the war to China, not because of the weakness on the part of the Indian Army, but because of political and bureaucratic follies. We fought 4 wars with Pakistan, and each and every war, we've given him such a licking that he's still recovering or trying to recover from the wounds that we inflicted on him. In 1965 war, his battle plans or operational plans were made by the Britishers and the Americans. They wanted to ensure that Pakistan humbled us. He had better tanks, better aircraft, and better artillery. His aircraft included state-of-art aircraft of that point of time: Sabres, Super Sabres, Starfighters. While we fielded the World War II vintage Tufanis, Vampires, Canberras, etc. As far as tanks were concerned, he had the latest tanks of that point of time, Patton M47 and M48. We had only the World War II Centurions, Shermans, and Stuarts. He outgunned us as far as artillery was concerned. Our maximum range was 11 kilometers. He had a range of 21 kilometers, which means we couldn't even close up to him. He was in a position to completely devastate us before we could even close up. All this notwithstanding, by the time the war ended, Pakistan was down to its knees. The Indian Army had got the better of him. The Indian Air Force had got the better of him. Navy was not employed. When we look at the 71 war, what were his war plans? He wanted to have breakfast in Jammu, lunch in Jalandhar, and dinner in Delhi. That notwithstanding, we divided his country into 2 parts. We are the only country in the world which created a new nation called Bangladesh in flat 13 days. And 93,000 troops of Pakistani army surrendered to the Indian Army, despite the fact that they had the wherewithal to last for another 6 months. That is the greatest surrender that mankind or humankind has ever seen in the annals of warfare.
This is your army. Today we have lots of deficiencies in terms of officers. It's been even thrown open. NDA has been thrown open for even girls. We are looking for young boys and girls with the highest qualities of head and heart. Interacting with the children of MSMS, I am convinced that you got very many children with the appropriate qualities of head and heart. And you must make an effort to come and join and be part of the Indian Army. Should you decide to serve with the Indian Army, we will give you a chance to operate in such areas which are absolutely and totally pristine. वहाँ के नदी नाले और हवाएं आपसे बातचीत करती हैं, and they share their secrets to a perceptive mind. उन्हीं वादियों में, उन्हीं पहाड़ियों में, उन्हीं नदी नालों में भ्रमण किया था गुरु नानक जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, श्री अरबिंदो ने. There they got the wisdom with which they thereafter stunned the entire world. Ladies and gentlemen, India is on the move. We are absolutely and totally unstoppable. You got to believe in yourself. You got to have confidence. We have the mental resilience to actually shake the world. We have the physical toughness to shake the world. If you've seen, as far as Pakistan is concerned, despite its daily attempts to infiltrate into our country, we made sure that 90 to 95% of efforts are blocked at the international border in the line of control. जो कुछ 4-5% अंदर आ जाते हैं, they are liquidated in the next 24 to 48 hours. In the last 1.5 years, after we removed Article 370 and abrogated 35A, we've gone flat out to ensure that insurgency and terrorism in the valley come to an end. 80 to 85% of his leaders have been eliminated. 80% of the terrorists have been eliminated. They're today short of manpower, they're short of material, they're short of weapons, and they're short of funds. This is all thanks to the zero tolerance policy that we put in place. As far as China is concerned, the Galwan encounter in eastern Ladakh convinced Chinese beyond an iota of doubt that Indian army of today is not the army that fought them in 1962. I said we lost the 62 war not because of the army's weaknesses, but because of political and bureaucratic weaknesses. In Galwan, unarmed 20 Indians, which included their commanding officer Colonel Babu, were attacked viciously by the Chinese by use of medieval weapons. But when the commanding officer died, who is known as the king or godfather of the battalion, there was so much of fury in the battalion that hundreds of people went up, again unarmed. And in a matter of about 1 to 2 hours of skirmish between the two armies, we killed more than 46. The Chinese had to seek permission from the Indian army to remove their dead through their helicopters. हमने खुद count किया physically their lifting of 46 bodies. Another 50 to 60 Chinese were thrown by us into the Galvan River where they froze to death. Americans and the Russians have said that 45 to 46, which we allowed them to take, were definitely dead. But NASA has shown images of 106 graves across the India-China border. However, the Chinese don't have the courage to accept the fact that they lost so many. They said they lost only 4 people, including one officer. Because should the Chinese government accepted Xi Jinping's desire and dream of getting re-elected in October this year for the 3rd term, will stand totally quashed. India is not beatable. Indian army, as I said, has become the most revered, respected and regarded army in the world. I also want to tell you something about the compassion, the integrity, the sensitivity of this army. जो भी फौज किसी और देश में गई है उसको बचाने के लिए या इन्वेड करने के लिए, their soldiers have indulged in large scale rape and murder and loot. Indian army stayed on in Bangladesh for almost 6 months. Not a single allegation, not one allegation of rape and loot. That is the character, that is the integrity, that is the sensitivity, and that's the compassion that your army displayed. We've been on a peacekeeping mission in 49 countries of the world. जिस देश में हिंदुस्तान की फौज जाती है, खुशी की लहर उठ पड़ती है. They say here is a professional army that has come, which has character and which has integrity. और हमारी जो समस्याएं हैं बहुत बड़े पैमाने पर उनका समाधान होगा. I am very certain that children of India, particularly the young faces that I'm looking at, their shoulders are strong, their thinking is futuristic,
They are visionary. They have the mental resilience to take India where India ought to have been. Swami Vivekananda ne कहा था in one of his talks in US कि I can look 150, 155 years ahead. एक समय आएगा दुनिया में बहुत हाहाकार मच जाएगा और उस समय एक देश उठेगा जो विश्व गुरु कहलाएगा. And he says that is going to be my India. And the way we are moving forward today, I am very certain that all of you who constitute the generation next have the mental resilience, the intellectual resilience to take India to the level and realize the dream of Swami Vivekananda. आज दुनिया में वास्तव में हाहाकार हो रहा है और दुनिया एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है कि एक ही कंट्री है जो मरहम लगा सकता है, वो भारतवर्ष है. I want to tell you that all along the line of actual control, which is almost 3,800 kilometers long, Chinese have brought in huge amount of forces. That notwithstanding, उनके जो सैनिक हैं, intellectually, physically, and mentally, they cannot measure up to the Indian army. कीड़े मकोड़े की तरह रोज गिर रहे हैं. 4 of the army commanders in the last 1.5 months, 1.5 years, have either died or they have been replaced because they were not able to withstand the rigors of that environment. I have served in that environment for very many years. It is the toughest environment that anybody can ever think of in the world. To survive and operate at between 16,000 to 20,000 is no joke. And the Chinese just cannot measure up. Secondly, they are very proud of the fact that they created a huge infrastructure, 77,000 square kilometers of express highways in Tibet. And they brought in 6,000 kilometers of railway line. I've flown 10 years along their borders. Average height of all that infrastructure is 14,000 to 16,000 feet. उसमें कई 100 पुल हैं. Each pull is there's no greenery. It stands up like a sore thumb. Indian Air Force today has attained the capability of wiping out most of the bridges in 24 hours. With the result that Chinese will find it impossible to maintain and sustain and replenish their forces. The Chinese today are scared of your navy. Quantitatively and qualitatively, they're much bigger. But Indian Navy today is so strong that it can virtually exercise sea control and sea domination over the entire area from the Straits of Malacca, which is Singapore, Malaysia, Indonesia, to Horn of Africa, Zimbabwe, Ethiopia, etc. They are also scared of the might of the Indian Air Force. We are much smaller Air Force in terms of quantity. But the type of weaponry that we got, the type of missiles that we got, worries Chinese. And they are absolutely not prepared to actually take panga with the Indian Army. And I can assure you, should they dare do so, they will be humbled. I have greatest faith and conviction in our generation next. I'm very certain you will take India to the level where it ought to have been. And in the next 5 to 10 years, the world should come on bended knees and request India to become a permanent member of the UN Security Council. We've been deprived our status and our position, notwithstanding our geographic size, our demographic size, and growing economic and military clout. I'm sure our generation next will take us there where we ought to have been. I've finished. I've always been impressed with your school, and I'm similarly very impressed today. In the last couple of years, I've been a chief guest of hundreds of schools, and I've seen a variety of programs. I must say that your program today was easily amongst the best, limitations and constraints of the pandemic notwithstanding. Once again, my profuse thanks to your principal, Ruchika ma'am, for having given me the opportunity of interacting with some of the brightest and the best children of my country. Thank you very much. Jai Hind. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you, sir, for sparing your precious time. We hope to have more interaction with you, sir. I feel delighted to welcome our esteemed manager, Sri S.M. Jainji, to cast the light of his knowledge upon us and share his enlightening thoughts. We welcome you, sir. Kakaji, we will be very grateful if you address the students now.
सर्वप्रथम मैं पीके सहगल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इनको अक्सर टीवी में भी देखा करता हूँ। आर टीवी में इनका काफी दफा ये आते हैं और अर्नब गोस्वामी के साथ इनकी काफी डिस्कशंस होती रहती हैं। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, और जो इनकी नॉलेज है अभी अभी जो इन्होंने जो सुनाया हमें, तो मैं देख के दंग रहता हूँ कि इतनी नॉलेज रखते हैं। और इन्होंने हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त और 26 जनवरी अपना एक विशेष स्थान रखता है। ये जीवन की स्वर्ण दिन होते हैं जिनको हम मनाते हैं, लेकिन हमारे देश ने काफी तरक्की की है फूड के मामले में। एक जमाना था, मेरा जन्म स्वतंत्रता से पहले हुआ था 41 में, तो मैंने अपने बचपन में कई चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। वो समय भी देखा है जब अमेरिका से हम भीख मांगते थे 420 के अगेंस्ट, हमें अनाज आता था जिसको हमें मतलब अमेरिका दान स्वरूप देता था। और आज ये युग है कि मोदी जी के और हमारे जो प्रीवियस प्रधानमंत्री हुए हैं उनके प्रयासों से इस देश ने अन्न मामले में, खाद्य में मामले में बहुत तरक्की की है। और दूसरा जो फ्रंट है मिलिट्री का, जो मिलिट्री का जो साज सामान और जो ताकत ये पिछले 7 सालों में बढ़ी है, मैं उसको देखकर अचंभा करता हूँ। और ऐसा लगता है कि अगले 10 सालों में अगर इसी स्पीड से हम तरक्की करते रहे तो हम दुनिया की वन ऑफ द सुपर पावर बन जाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आज का जो प्रोग्राम बच्चों ने किया, ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक फिल्म देख रहा हूँ। इतनी तरीके से इसको डायरेक्ट किया गया और जैसे जैसे उसकी बैकग्राउंड बनाई गई, देखने लायक था। आई कॉन्ग्रेचुलेट द डायरेक्टर हु हैज डन ऑल दिस थिंग। और मैं सब बच्चों का जिस तरीके से ये सारे प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ। एक दफा फिर मैं सहगल साहब का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for your persistent inspiration. I feel privileged to extend my welcome and invite the most admired and revered assistant manager, Shri Prashant Jain ji, to illuminate with us his ideas and inspiring words. We welcome you, sir. Good morning, Jai Hind, and welcome everybody on this Republic Day program. It is our extreme pleasure to have Sir P.K. Sehgal again, and he has witnessed our earlier programs also, and it has always been amazing with his knowledge to address our school, our children, and motivate our children. Whenever he speaks, it increases our motivation, our patriotism for the country. Sir, I thank you very much. I welcome you here also, and I would like you to keep in the future also keep coming and guiding our students and children. And for the children, the teachers, thank you very much. You've done a fabulous program. The technology, the meetings, the behind the scenes work is amazing. And the end result is absolutely breathtaking. Jai Hind. Thank you, sir, for such stimulating words, and we express our gratitude for your constant guidance and support. I heartily welcome our Honorable Founder Principal, Shri S.L. Jain ji, the backbone and the fatherly figure of MSMS, to shower his blessings upon us. We welcome you, sir. Thank you very much.
जनरल साहब, आपसे मिलकर हमेशा इतनी खुशी होती है और आपकी वाणी सुनने के बाद तो ऐसे लगता है कि हमारा देश वाकई 10 साल के अंदर सारी दुनिया के ऊपर छा जाएगा। और जो श्री सुरेंद्र मोहन जी ने कहा, सारी चीज को समराइज किया, जो हमारे बच्चों का कार्यक्रम है, जो हमारे स्कूल की एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वह सारा इतना सुंदर, इतना प्रभावी, इफेक्टिव है कि हमारे स्कूल का भविष्य भी आगे बहुत उज्जवल है। मिसिज रुचिका सुखीजा, उनकी टीम, वो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से प्रशांत जी, आशीष अग्रवाल जी, सभी लोग इस योगदान में, इस आहुति के अंदर, इसके अंदर अपनी, इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जनरल साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कूल को, महावीर स्कूल को एडॉप्ट करें और यहाँ के बच्चों को जैसे आज आपने मोटिवेट किया है, इस तरह से मोटिवेट करें ताकि हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, अपनी सेहत, अपने दिमाग की ट्रेनिंग, अपने दिल की ट्रेनिंग, अपने शोल्डर्स की ट्रेनिंग करें और देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपने को समर्पित करें। मुझे ये मौका मिला, मैं पुनः जनरल साहब आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, श्री सुरेंद्र मोहन जी का और सभी साथियों का, और बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे इनाम जीते हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। धन्यवाद। जी are all सही है ना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल जनरल साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी नहीं, मैं अक्सर विक्रम जी से आपके बारे में पूछता रहता हूँ कि आपकी सेहत के बारे में, आपकी और आपकी वाइफ के बारे में। नहीं जनरल साहब, मैं ठीक हूँ, बहुत मेहरबानी है आपकी, और योर कंसर्न इज रियली मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अस एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। Thank you very much. Your relationship and the friendship that we have developed over the years is indeed is helping us in moving forward. It's very kind of you. Thank you, sir. We are all inspired by your great words, sir. Thank you for sparing your time from the busiest schedule on gracing the occasion. I am looking forward to invite our Honorable Academic Counselor, Shri Ashish Agarwal ji, to share his motivating thoughts with us. We welcome you, sir. आदरणीय मेजर जनरल पीके सहगल साहब, मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और प्यारे बच्चों, आप सबके इस फैबुलस शो पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम MSMS जिन्होंने ये पूरा शो ऑर्गेनाइज किया। खासतौर से इस शो के जो होस्ट हैं हमारे सारे बच्चे, जिन्होंने बहुत सुंदर एंकरिंग की है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, यू हैव डन अ फैबुलस वर्क। आप सबको हमारे 75वें रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जनरल साहब, मैं आपको अश्योर करता हूं, आपने जिस तरीके से आज हमारे बच्चों को मोटिवेट किया और बहुत ऑब्जेक्टिवली इंस्पायर किया, आज बहुत सारे बच्चों ने प्रेरणा ली होगी और आने वाले कुछ वर्षों में आपको महावीर स्कूल से भी कुछ बच्चे जो हैं इंडियन आर्मी की रैंक्स को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। आई अश्योर यू कि आपने जो प्रेरणा आज सब बच्चों को दी है, इसका हम भरपूर उपयोग करेंगे और आने वाले वर्षों में अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू टीम MSMS एंड जय हिंद। Thank you. Thank you, sir, for being our role model. I humbly invite our distinguished PTA Vice Chairman, Dr. Ujit ji, to encourage all of us with his wonderful thoughts. We welcome you, sir. Good morning to everyone, and and I'm expressing my humblest thoughts and ideas, and I really pray to everyone who is participating today, including our chief guests. Azadi ka Amrit Mahotsava. To me, I think the fruit of freedom I have already experienced today, seeing all the students and our esteemed speakers. Your performances has no words to properly express in my words. It is unfathomable. My dear students, the fruit of freedom is not a simple fruit. It is a lifesaver. It is an elixir of life. And the taste and the quality and the power will surely increase if you keep on planting it more and more.
It is not something that you just collect and eat and enjoy it and finish. The freedom, the fruit of freedom is something totally different. Let us celebrate the Republic Day with full pomp and show, with all our talents, with all our abilities. Let us celebrate every day this moment. Let us give ourselves the freedom from poverty, narrow-mindedness. Let us practice freedom by hard work, full of respect to the services of our freedom fighters and the armies. Let us become a worthy citizens of the country. With this, I wish you and express my best wishes, and let's celebrate the Republic Day again and again and again with lot of fervor and lot of enthusiasm. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for inspiring us with your worthy ideas. I would like to thank our guests of the day wholeheartedly for sharing their valuable thoughts and for explaining the real meaning and the importance of the Republic Day celebration. Here we come to the concluding part of our patriotic functions. गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति एवं आप सभी का अमूल्य समय देने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अंत में इस संदेश के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, यह बात हवा को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती जतिंदर कौर महोदया को और निवेदन करती हूँ आप आए और सभी का धन्यवाद करें। धन्यवाद इशिता। महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस वर्चुअल मीटिंग में आमंत्रित परम अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय पूर्व मेजर जनरल पीके सहगल जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार सहित धन्यवाद प्रकट करती हूँ। हमारी पूरी टीम MSMS की तरफ से आपने मूल्यवान समय से कुछ अनमोल पल निकालकर हमारी इस सभा की शोभा बढ़ाई सर। हमारे बच्चों ने और हमने आप सबसे आज आपसे मूल्यवान विचार लिए हैं। एक पंक्ति जरूर, एक गीत जरूर कहना चाहूंगी सर, वो हमारे जमाने का है, शायद आपके जमाने का भी है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों की मीटिंग इस तरह से आपके साथ होती रही तो हमारा भी स्कूल एक मिनी डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बन जाएगा। तो हमने आपसे कुछ प्रेरणा भी ली है। पावन मानवता का संगम, नव आशाओं का संचार, नई सोच व नई उमंग से मानवता की हो जय जयकार। हमारे गणतंत्र की है ये पुकार, हम सब मिलकर करें इसे साकार। धन्यवाद है सर आपका हार्दिक। हमारे विद्यालय की मूल्यवान शक्ति, हमारा सबल, हमारा संबल, हमारी परम आदरणीय प्रबंधक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य, हमारे मैनेजर श्री SN जैन जी, वाइस चेयरमैन श्री प्रशांत जैन जी, हमारे फाउंडर प्रिंसिपल और एक्स डायरेक्टर श्री SL जैन जी और एकेडमिक काउंसलर श्री आशीष अग्रवाल जी, PTA वाइस चेयरमैन श्री अजित जी का हार्दिक आभार है। मूल्यवान समय से इस सभा में उपस्थिति दिखाकर न केवल आपने हमें प्रेरणा दी है बल्कि छात्रों का भी उत्साह बढ़ाया है। हमारे विद्यालय की एक अग्रणी मशाल के रूप में हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती रुचिका सुखीजा जी का सराहना पूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पिछले कई दिनों से क्षण क्षण
हम अध्यापकों के साथ जुड़कर इस उत्सव के संपन्न होने का पूरा रोल निभाया है। इस मशाल को आगे चलाने वाली हमारी कन्वीनर श्रीमती गीता कुमार जी और कोऑर्डिनेटर सुश्री नवतेज के सुव्यवस्थित कार्यक्रम संपन्नता के लिए उन्हें शुभकामनाएं व साधुवाद है। टीम MSMS की सबल समूह शक्ति वाहिनी टीम सभी विभाग, कला विभाग, खेल विभाग, संगीत विभाग, नृत्य नाटक विभाग, कंप्यूटर विभाग के सभी प्रमुख अध्यक्षों को उनके परिश्रमी प्रयासों के लिए साधुवाद व धन्यवाद है। इस कार्यक्रम की जो सूत्रधारिणी टीम है, हमारी कमेंट्री टीम, इन सभी टीम के जो सदस्य हैं, हमारे प्रेरणा मैम, हिमानी मैम, सतीश सर, और इनके जो आगे संचालक हैं इशिता, अरहान, विधि, तेजस और राघव, जिस सुंदरता से आपने इस कार्यक्रम को चलाया है, यूं लगा ही नहीं कि ये फिल्म चल रही है या हम सचमुच में एक सभा कर रहे हैं। हमारे स्नेही, उत्साही, ऊर्जावान जितने भी शिक्षकों ने इसमें, चाहे वीडियो बनाने की बात हो या फिर होस्ट की बात हो, उन सब ने अपने इस कार्यक्रम के सहयोग में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। उन सब के लिए शुभकामनाएं व साधुवाद है। हमारे युवा स्नेही, उत्साही, ऊर्जावान छात्रों के शानदार प्रदर्शन एवं उत्साह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अनेक सराहनाएं, साधुवाद है। और हमारी सबसे बड़ी संपदा हमारे मूल्यवान अभिभावक, जिन्होंने धैर्य और उत्साहपूर्ण सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में अपना समय दिया, अपनी शक्ति दी, अपनी ऊर्जा दी। तो धन्यवाद है इस कार्यक्रम के समापन हेतु। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए एक दो भावनाएं प्रकट करना चाहूंगी। गुल खिला तो गुलसिता बना, तिरंगा खिला तो हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान खिला तो जनतंत्र खिला, हम खिले तो वतन बना, अब वतन से हैं हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, यही गुनगुनाएं। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। Ma'am, we appreciate your kind words and the wonderful audience today. तिरंगा शान है अपनी, तू ही अभिमान मेरा है, तू ही गौरव है भारत का, तिरंगा मान मेरा है। तेरे वर्णों को देखो तो मुझे सब धर्म दिखते हैं, तू है रूप भारत का, तू ही अरमान मेरा है। Our revered forefathers never asked anything for themselves. They just wanted the safety and prosperity of our motherland from the heavens. Let us end our program and enthuse their spirits with the gallant rendition of our national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय Thank you, ladies and gentlemen. Have a wonderful day. जय हिंद।